Good morning, Namaskar. I, Kriti Vadhera, would like to welcome all the teachers, learners, educators and students to CIT NCERT's special live phone-in program. And you're watching us live on PM eVidya's channel number 1 and 2. And this special session is about the online orientation program of the new textbooks which have been recently launched for class 1 and 2. And I take this privilege to invite all the viewers who are watching us live from northeastern regions of our country. And today we are joined by an esteemed panel who has compassionately worked for these textbooks, and they will be telling you in detail about the textbooks for next 2 hours. And I would like to introduce the panel today. Professor Suniti Sanwal, Head Department of Education in Elementary Education, is there with us. I welcome you, Professor Sanwal, for today's discussion. Namaskar to everyone. And we are joined by Professor Vardha Mohan Nikalje as well, Professor in Elementary Education, NCERT, New Delhi. I welcome you as well. Thank you. और आज हमारे साथ हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर बात करेंगी कविता बिष्ट जी. आप हेड हैं KVS NCERT में, आप कार्यरत हैं. आपका बहुत बहुत स्वागत आज के इस सभी को नमस्कार कार्यक्रम के लिए. Or and with this we will be joining by our other guests also. Professor Chamanara Khan will also be discussing about the Urdu textbooks of class 1 and 2, and Miss Nisha and Singh would also be joining to discuss about the textbooks today. And in this this discussion, you please feel free to ask questions. You can send all your questions to the YouTube streaming which is happening on NCERT Events YouTube channel, and there in the live chat box you may send all your questions, suggestions about this program and the textbooks as well. And you can dial on the number also to send all your suggestions and questions to us. Number would be 8800440559, and these are the various mediums with which you can contact us, send your suggestions. And you can also email all your suggestions to the email address flashing on your screens right away. And here I would like to remind you that the academic session of NCERT has already begun, the 2023 and 24 session. And if you have not purchased the textbooks yet, you can simply buy them from the publication divisions situated at New Delhi, Ahmedabad, Bangalore, Kolkata and Guwahati. And the timings for these publication divisions would be from 9 AM to 6:30 PM, and they are open for you on all Saturdays, Sundays and all gazetted holidays as well. And if you wish to order the books online, simply log into NCERT's official website, and there you can place the order. You'll be getting all these textbooks right at your doorstep without any delivery charge. And if you really wish to read the PDF version of all the textbooks, you may simply download the mobile applications of ePathshala, Diksha and NCERT. There you'll be finding all the textbooks, and on website of NCERT all the textbooks are available in the PDF version. So with this we shall begin with today's discussion. I welcome you again, Professor Sanwal. So we have been discussing about these colorful and vibrant textbooks for class 1 and 2. I would like you to throw some light on the textbooks for our northeastern viewers as well. Thank you, Kriti, and a very warm welcome to all of you once again. So as you know that this is the 7th day of the online training program on the new textbooks, and today we are talking to the experts, the SCRT, DIET, CRC, BRC members, teachers and teacher educators of the northeastern states. Now we are often asked that many of the states are not using NCERT textbooks, so why orient us? So I would like to tell you that these textbooks are based on the recommendations of NEP 2020 and thereafter the NCF-FS. So even if you are not using the textbooks, you must have a look at these textbooks, because play-based, discovery-based, story-based, activity-based approach has been used in the development of these textbooks. So once again, a very warm welcome to all of you who are with us today, and I would like to highlight what is the process of development of these textbooks. So as you know that NEP 2020 was launched, which gives a vision of how education should be in the country,
And based on the NEP 2020, the curriculum framework was launched, that is the National Curriculum Framework for Foundational Stage, which gives us the directions as to how to implement the recommendations of NEP. So, how do we translate the vision into the reality is what the NCFFS tells us, which was launched in 2022. And after that, a syllabus cum textbook committee was constituted by NCERT, and this committee had experts from literacy, numeracy, psychology, special needs, pedagogy, early childhood care and education, and lot of experts from the university, from the school teachers, teacher educators were a part of this committee. This committee, by looking at the NCFFS, developed the syllabus for entire foundational stage, and based on the syllabus, two things have been developed. One is a collection of learning teaching material, and we are calling it Jadui Pitara, and the next is the development of textbook that we are here to discuss in detail today. So, I would just like to tell you about the Jadui Pitara. NCERT has already sent a complimentary Jadui Pitara to all the SCERTs. You can go to your SCERTs and have a look at it, but just a brief as to what all does this Jadui Pitara contain. So, this Jadui Pitara has a lot of toys which are mapped for gross motor development, fine motor development, socio-emotional development, language and literacy development, mathematics development. So, there are musical instruments, there are jigsaw puzzles, there are dolls, puppets, then there is a ladder, there are this bowling set. So, lot of toys are there for children to play in outdoor as well as in indoor areas. The Jadui Pitara also has some posters, some poem posters, which these poem posters help in creating a print rich environment, and also some kind of science or mathematics or languages integrated in these poems. For example, this poem talks about that a spider has 8 eyes, and what does it do with these 8 eyes. So, science integrated, and a lot of games around language. For example, what words rhyme, what words do not rhyme. So, a lot of such games can be played around these posters which are there in Jadui Pitara. Then there are 9 picture reading posters which help the children express themselves, predict, question, talk about what they see, and also talk about things which are beyond this picture. Now, for example, in this picture reading poster which tells you the journey of a wheat, you see right from sowing to weeding to harvesting to thrashing and to grinding, and this going to the shops, and then the mother buying it and then making chapati. So, right from sowing of seeds to bringing the chapati into the plate. So, it talks about different stages. So, you can tell what is happening, you can ask the child what is happening. There are certain keywords, there are certain vocabulary, new vocabulary to be introduced through this picture. And then you can also ask some questions which are beyond this picture. For example, what will happen if the farmer decides not to grow wheat? What will happen if there is no water to knead the flour? So, these kind of broad questions which help the children in creative thinking, problem solving, analytical ability can also be developed through these picture reading posters. Then there are a lot of classification cards. Now, this is one example, this is a joker card where you see that children can classify these cards as per the color or as per the shape or as per the facial expression. So, there are multiple ways by which these cards can be classified by children. Now, the Jadui Pitara also has some sequential thinking cards, that is what comes first and then after that and after that. So, thinking in a sequence is a very important skill that needs to be developed for all kinds of problem solving, analytical skills. You need to think in a sequence,
and the coding that children learn later on also requires sequential thinking abilities. So through these sequential thinking cards, it helps children develop the ability to think in a sequence. This Jadui Pitara also has pre-number concept cards. So there are a lot of mathematical concepts like big and small, tall and short, more and less, in and out. So these kinds of things are known as pre-number concept, and they help in developing the mathematical sense in children. So this Jadui Pitara has cards which are based on the pre-number concept. Then there are some memory cards which again help in observation skills, in intently watching. So the child is shown the first picture, and then the child is supposed to be seeing everything, all the details of the picture, and then the second picture is shown wherein the child has to tell what is missing. So it helps in developing the memory of a child, the observation skills. So these kind of cards are there in Jadui Pitara. Then it also has color dominoes, which helps children learn different colors, the names of different colors. They learn to match different colors. So through games, through play, children can learn about the colors. And it also has number dot dominoes, where the children learn to count, they learn one-to-one correspondence, they learn to recognize the symbol, and they learn to match the dots with the symbol. And all of these cards also tell, at the back of this it is written in English as well as in Hindi, how to use these cards. Now the Jadui Pitara also has 5 story cards. This is a very common story of a monkey and 2 cats, and how a story is given in English as well as in Hindi, and also how to use these cards have also been given in English and Hindi at the back of these cards. So the teacher is supposed to tell a story. So initially you can just show the cards and ask the child to create his or her own story, and then you can tell the actual story which is there, and then give these cards to arrange it into a sequence. So it again helps in attentive listening as well as sequential thinking. And as you notice, the card 3 and 4 are very closely matched. So if the child has not intently listened to the story, then he will have difficulty in arranging it in a sequence. So it helps in attentive listening as well as in sequential thinking. Then it also has lot of tracing cards. These are Hindi Varnamala for Swar and Vyanjan. So many times we force a child to hold a pencil and write when the finer muscles are not yet ready in a child. So these cards help the child. They just need to trace these alphabets through their fingers, and they learn to write it before actually holding a pencil. These cards also have 2 pictures given, for example, A se anar and A se adrak, and you can ask the child to name more things that he is aware of which has an A sound. So it helps the child learn letter sound correspondence and also the correct sequence of writing letters. Similarly, we have alphabet tracing cards for capital and small letters, and here also lot of games can be played around with these cards. For example, like if you just say the end sound at, and then you can ask the child what happens, how do you read it if I write b in front of at, so it becomes bat. What if there is a C? What if there is a D or an DAT? Is this a word? Does it mean something? So as children grow, you can have lot of games played with them. Initially when they do make these rhyming words, you can, if it is rhyming and a nonsensical word, you can accept it, but as children grow, they are supposed to tell only the words which have some sense. So lot of games can also be played around this. It also helps in creating a print rich environment. You can just place it in the classroom, and wherever children are coming and going, they can just or they can just be asked to trace these cards. Then there are number tracing cards. It is from 0 to 9, and here also the correct sequence, and so pictures are also shown. So like a lot of games around this can also be played. For example, you can ask a child, like if I am showing you 4 fingers,
how can you show me 4 by writing something else? For example, 2 and 2 fingers or 3 and 1 finger can also become 4. So, a lot of games around this can also be played. The Jadui Pitara also has these books kept in it. One is the Unmukh, it is a teacher handbook for Balvatika. It gives you the entire introduction of the Balvatika, the characteristic of children, what kind of classroom arrangement needs to be made, and mapped to the domains and the competencies given for each domain in the NCFFS. It gives you a bank of activities and it is in a continuum. So, there are activities for 3 to 4, 4 to 5 and 5 to 6 year old children, and it also highlights the assessment that the teacher needs to do. So, this Unmukh is an activity bank. It also has some stories, it has some rhymes, some songs that can be used in the Balvatika stage. So, it is the entire package which can be used by the teachers as well as the trainers. Then there is an activity book called Anand. It has lot of integrated worksheets. So, lot of domains are integrated in these worksheets, and whenever you feel that the child is ready to do this worksheet, you can take that off and give it to the children. Jadui Pitara also has a magazine, children's magazine called Phirki Bachon Ki. This is a magazine which is brought out by Department of Elementary Education, and so this is a biannual magazine. So, it has lot of good articles, lot of activities for children, for which are written by the children for children or by adults for children. It has lot of folk arts into it. So, lot of activities and talk can also happen around this magazine. The Jadui Pitara also has the graded reading series Barkha, and it is a group of 40 books which are graded. So, the first 10 books have 1 sentence stories, the second group has 2 sentences in each page, the third group has 3 sentences, and likewise these are graded reading series. So, today we are here to talk more about the launch of the new textbooks. So, 12 textbooks have been launched. The Hindi textbooks for class 1 and 2 is known as Sarangi. The English textbook is known as Mridang 1 and 2. The English textbook is known as Joyful Mathematics class 1 and 2, and this mathematics textbook is also available in Hindi and Urdu. The Hindi version is known as Anandamayi Ganit for class 1 and 2, and the Urdu version is known as Dilchasp Riyazi 1 and 2. And we also have Urdu textbooks known as Shehnai 1 and 2. So, in all 12 textbooks have been launched by NCERT, and we will be discussing what all is there, what is new in these textbooks in our further discussion. So, that is all from my side. Thank you. Thank you, Professor Sanwal, for enlightening all our viewers here, and this was the introduction to the new, beautiful, vibrant, colorful textbooks, I would say, which are having the the guidelines of New Education Policy 2020, as Professor Sanwal has said, and they have the National Curriculum Framework. They have designed on those guidelines itself. So, we will be knowing more about the textbooks in detail, and in discussion I would like to invite Professor Vardha Mohan Nikalje, and we will be knowing about the English textbooks from her. Thank you very much. Today we will be talking about the English textbooks developed here for classes 1 and 2 at NCERT, and as Professor Sanwal has already said, we as teachers, we as academics, there is no harm in knowing something more. It is not necessary to be cocooned only into looking at a particular state textbooks. I am sure all of you also look at the textbooks from other states. For instance, we at the DEE had a look at the Sikkim textbooks, the Nagaland Heritage series we have seen, and so on. So, there is no really harm, because knowledge, to paraphrase Mahatma Gandhi, knowledge comes like fresh air from the windows and it comes in from all sides. So, that said, let us have a look at Mridang for classes 1 and 2. So, here
The mridang, as you can see, is a kind of a percussion instrument. It is highlighted on the cover pages, and the salient features, the main feature of the English textbook as well as the Hindi and the Urdu ones as well as the maths ones is that it is a textbook cum workbook. There is no need for parents and teachers and schools to get an additional workbook, because the textbook covers enough exercises, has adequate number of activities for embedded in the textbook itself, so that there is no need for another workbook. The focus is on speaking and listening, particularly important because English is L2 generally in our country. They need more input, oral input from the teacher, from different other teachers who will be able to speak in English, from the librarian, from audio input, from audio video input, and so on. It is only then that children will be able to pick up English words and phrases, greetings and sentences, just as they do when they learn the mother tongue. From speaking and listening, that is the oral and oral skills, we move on to reading and writing. There is a gradual progression. The initial units in class 1 focus a lot on speaking and listening, and from the middle onwards it moves to reading and writing, which we shall be looking at in the forthcoming slides. The textbook has a lot of scope for the learner's active participation in engagement with language. The textbooks invite the young learners to draw in the pages, to scribble, to write, to sing along and to read, which we shall be looking at. But the main thing is that when they actually engage in the language, when they actually own the textbook that they are using, then they will be able to move on with confidence in learning English. There are of course detailed notes for teachers. The placement is at two places. One, there is a section about the book which comes immediately after the foreword to the textbook. There are also detailed notes for the teachers following every activity and every poem, so that the teacher would be able to see the reflection of the national education policy in its tangible form, that is the textbooks. Presentation of the content in the textbook is found in different formats. There is a comic book strip about a cat and Recording a rat, in progress. and there is also the action songs in class 1, short poems in class 2. There are narratives and there are stories. I say narrative because it is not a story in the traditional sense. It is not like once upon a time and then moving on to happily lived ever after. It is a narrative. It describes the child's daily routine. It describes a family, a sparrow family, and so on. Engaging illustrations, these, as Kriti has already said, these are what makes these textbooks vibrant. An illustration, no matter if it is in black and white or in color, will, in addition to supporting the text, provide a base for the enhancement of speaking skills. As you can see there, there are two illustrations given on this slide. It is not just, you know, it is about a poem about two little hands, two little ears, and so on. So, in addition to supporting the poem, the content of the poem, the teacher can ask children to describe what the girl is wearing, what the color the bird is, and where is it sitting, and so on. There is space and scope for exploring multilingualism, which is one of the salient features of the NEP 2020 and one of the recommendations in the NCFS. That is, multilingualism, many times the people do misconstrue it as knowing many languages. So, a multilingual is not the same as a polyglot. Sometimes in teacher training, we are asked the question very frequently, children in my classroom,
they come from 10 different linguistic backgrounds. How am I supposed to teach them? Especially in the younger classes, do I have to learn their languages in order to be able to communicate to them? So, this is certainly not the case. When you are teaching English or Hindi or Urdu or any other language, we as teachers need to accept that multilingualism is an essential feature in our linguistically diverse country. We all are multilingual, we all know more than one language, at least if you count the number of languages that you can read and write, that is the script, and add to these the number of languages that you can speak. Add to these the number of languages that you can understand but cannot speak. It definitely means you and I, we are all multilingual, and so are the children who enter our classrooms. So, the textbook explains, and also the handbook that Professor Sanwal mentioned, Unmukh, also explains. The section about the book also explains about multilingualism. Multilingualism is an attitude of respect for all mother tongues that enter our classrooms. Integrated grammar, grammar no longer is taught in isolation. The grammar aspects need to be integrated in the print rich environment, in the oral input given to children, and in the exercises and activities and so on. There is the inclusion of the Indian language, cultures, traditions and languages, which we shall be looking at. The 4 blocks model, which is emphasized in the NCFFS, talks about oral language development, word recognition, reading and writing. This holds true for all languages, and my colleagues who will be talking about the Hindi and the Urdu textbooks will also deal with these. In the Jadui Pitara, you have seen posters and pictures which encourage conversation in various languages. So, the child would be asked to describe or can be encouraged to notice details, to talk about shared experiences such as a train journey, for instance. Has the child travelled by train? If not train, by bus. If not bus, then some other vehicle, by car, by cart and so on. They will be asked to share their experiences. And moving on to storytelling. Storytelling is as old as human civilization. When elders and children would gather around a fire, the elders would talk about and narrate the prowess of other people in that particular tribe or society. So, storytelling has always entranced children, and this we must put to good pedagogical use. Drama and role play will follow when the child is a little more confident in using the language. In word recognition, phonological awareness activities have been interspersed in the pages in between chapters in these 2 textbooks, because phonological awareness is very essential in order to build up vocabulary, as I am sure you all as experienced teachers and teacher educators do know. Professor Sanwal was giving the example of cat, bat, mat and dat, which is a nonsensical word. So, changing the first letter does lead to change in meaning, and the child will also be able to recognize that certain words are nonsensical in the sense that they are not words in that particular language. So, these can best be understood through letter recognition and through sound symbol association. This is followed by skill focused writing, which we shall be talking about later, and letter and word reading. Reading, when it comes to English, it is possible that of course the class 1 child will not be able to read all on his or her own in the beginning. So, read aloud would be essentially by the teacher and perhaps at home. Shared reading, where children begin to repeat the certain phrases which are repetitive in the poem or in the narrative. Guided reading, and ultimately by the end of class 2, independent reading in English. Writing, again modeled writing followed by shared writing, and moving on to guided writing, finally
achieving independent writing of short sentences by the end of class 2. The themes, as you can see in class 1, my family and me, life around us, food, seasons, and in class 2, fun with friends, welcome to my world, going places, life around us again, and harmony. So, as you can see, there is an extension. Most of these themes cover the EVS content. They also include some mathematical elements, and above all they serve as a vehicle for listening, speaking, reading and writing. Moving on from class 1, my family, to class 2, welcome to my world. Moving from food and seasons to harmony in class 2. So, you can see there is a progression in the way that the topics have been dealt with. The aspects covered are let us sing in class 1, let us recite in class 2, let us listen. Again, let us listen, we have made a particular focus on listening because listening is sadly enough neglected in our schools, which tend to focus more on reading and writing. So, my earnest request to all teachers and teacher educators, whether or not you are following the NCERT books, is to address the listening skill, which is a receptive skill which cannot easily be assessed, but nevertheless is important for speaking, reading and writing. Let us speak. The textbooks provide ample opportunities for let us speak, whether and even if the child uses a non-English word, there is no need to correct the child immediately or bluntly, but to encourage the child to finish expressing what he or she wants and then to correct it gently. Let us read, again from read aloud to independent reading, as we have already seen, and then let us draw. It may be surprising to see drawing activities in a language textbook, but it is not merely giving a blank page and asking the children to draw. So, although that also has cognitive implications, let us draw here is join the dots, to create the drawing of a fish, for instance. And how will they join the dots? By going in the alphabetical sequence. There is also in class 2 a background, blue sky, flowers in the foreground and so on, and the child is invited to draw what else is needed to complete the picture. So, the children may draw clouds, birds, a frog on the ground, they may draw an aeroplane or whatever fits their imagination. So, it also means indirectly we are telling children that there is no one correct answer to everything. It could be anything and all of them can be correct. Let us write, as I said, in the second half of class 1, where children would be writing words to fill in the blanks or letters to complete a word and so on. Let us do, where children are asked to touch and different objects in the kitchen, for instance rice or vermicelli or oil, salt, and describe the texture, which one is grainy, which one is smooth sliding and so on. The alphabet, although it is taught in the preschool, it is possible that some children may not have had exposure to LKG and UKG and perhaps have joined class 1 directly. So, in this case there is the ABC song. Teachers are also asked to use the Jadui Pitara alphabet cards or create cards of their own to teach children the letters of the alphabet and, more importantly, the way of writing the letters of the alphabet. For instance, while writing the numeral 8, it is necessary to begin at the top and to move towards the left. However, many adults I have seen, they write the numeral 8 moving towards the right, which is again wrong, but then children need to be taught at a young age so that it remains with them for the lifetime. The one here on the slide is the alphabet phonic song, which talks about each sound sounded out by the letter of that particular letter of the alphabet. Greetings, in addition of course to, this is an English textbook, so there will be the children need to be taught good morning, good afternoon, good evening and good night, as you can see, supported by the illustrations. Yet I would like you to focus on the first two sentences
when I meet someone I say namaste. So, here the English textbook, as you can see, is rooted in Indianness, that is the most common word that they would be hearing perhaps in their background, in their surroundings would be namaste. Note to the teacher at the end of the page encourages teachers to ask children to say what word they use in their mother tongue when they greet someone. It also provides a world view when children are come to understand that in some cultures the greeting is linked to the time of day, and in other cultures using the word namaste for instance can be used at any time of the day. Fun with numbers, this describes again the cross cultural cross disciplinary area that I was talking about, where the poem 1, 2, 3, 4, 5 has mathematical elements in it, numerals. Once I caught a fish alive. 6, 7, 8, 9, 10, then I let it go again. So, the child is not harming the fish, has caught it playfully and lets it back into the water. This means that there is no harm intended to creatures. There is the underlying theme of peaceful coexistence. Here this is an action song. The mathematical element here is counting the numbers backward from 5 to 1, 5, 4, 3 to 1. 5 little monkeys jumping on a tree. I am sure all of you have poems like these which you must have recited to children. There is only one change here, one fell down and bumped his knee. The original poem had 5 little monkeys jumping on the bed and one fell down and hurt his head. So, to avoid the connotation of violence, we have said bumped his knee here, and 4 little monkeys, 3 and 2 and so on. These action words like jumping can be replaced with hopping, skipping and other action words which have come in the preceding chapter. This picture, a very interesting picture, something that children will love to engage with, is from the magazine Firki Bachon Ki that Professor Sanwal has already said has been developed at the Department of Elementary Education. The question here, as you can see, can you see the elephants? And all children will jump up and enthusiastically say yes. Where can you see them? So, they will all excitedly say, you know, there is an elephant outside the window, there is one in the picture frame, there is one here, there is one there and so on. It is different from the original, you know, maybe textbooks of 3 decades ago perhaps or 4 decades, where point out the elephants that you see. So, first we begin by asking a question, can you see the elephants? To you and to me it may seem a small thing, but for children it is a really different way of getting them to engage with the textbook. And the note to the teacher tells them to help children locate the elephants at different places. So, what are children doing here? They are actually using prepositional phrases outside the window, on the table, in the picture frame and so on. They are also using adjectives to describe the elephants: large, black, grey, brown and so on. Here the concept of sharing is reinforced. There is a lesson on children who have brought tiffin boxes to the school as usual, and of course many schools do have the midday scheme as well, midday meal scheme. Here in the lesson one of the children has not brought her tiffin box and other children share theirs with her. Here the teacher is also cutting fruit and then sharing it. So, the concept of team spirit, cooperation, sharing, all these are reinforced in such lessons. We need to help children not only increase their vocabulary, but also gain confidence in speaking, and for these they need support in sentence structures. One example is as you can see on the slide, children are already familiar with the names of the vegetables, tomatoes, brinjals, carrots and so on. So, the sentence structure here is yes they are, no they are not. So, are these onions? Yes they are, these are onions. Are these tomatoes? No they are not, these are brinjals. So, when these objects the sentence structure is learnt, they can use it for any objects. Are these from class 2? No they are not. Are these children your friends? Yes they are, and so on.
in the Jadui Pitara there is a laminated book called What is Missing, and there the young learners are invited to point out what is missing. You know, a school bus with one of the tires missing, a kettle with a handle missing, and so on. So, there in the preschool stage the children may only be pointing out, they may not say the word exactly, and gradually they will be invited to writing skills here. As in the Jadui Pitara, the picture was of a bicycle with one part missing. Even to identify the part that is missing, children would need to know all the parts of the bicycle, and here they are asked to write, label the parts of the bicycle such as the seat, the pedal, and so on. Out is a lesson which is found in the Hindi and Urdu textbooks as well as in the English one. So, this is about two children who are playing bat and ball, the ball gets lost, then they create one, and so on. I invite you to go through the lesson in the textbook, which you can use in addition to the state textbooks perhaps for those children who would whom you want to keep engaged in, because some children might finish the lessons soon and would require additional reading material which would be age appropriate. So, in this lesson, which is a reflection of multilingualism, they also use scraps of paper, scraps of cloth to create a ball, again which is reinforcing the meaning of being eco-friendly. Rangoli, again we are teaching many things through this simple activity. It can be maths, it is a 4 by 4 dot grid. There is an X in the middle. This children would have seen perhaps in embroidery and in so many other things. Then there is a curve, and then it becomes ultimately a flower. Children can create different patterns using these 4 by 4 and moving on to 5 by 5 grid, and so on. The class 2 ends with a unit called harmony, as we have seen, and it talks about the diversity in our beautiful country. It focuses on the monuments, on the language and many other things, ending with this last page that we are all Indians. However, each one of us is special, each one of us is unique. Thank you very much, and I hope you would be looking at the new English textbooks, Mridang, for classes 1 and 2. Thank you. So this was the introduction to the English textbook. So you was Mridang, by the name of Mridang, the textbooks for class 1 and 2. And here Professor Nikhalje has elaborated what you will be finding in the textbook. I thank you, Professor Nikhalje, for joining us. Thank you. And with this we will be discussing about the Hindi textbooks as well. और यहाँ आप बातचीत में आपको मैं शामिल करना चाहूँगी कविता जी, एंड हम आपको लगातार बता रहे हैं कैसे अपने सभी दर्शकों को कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, taking the guidelines of new education policy 2020 and national curriculum framework, we have incorporated all these things in NCERT for all of you viewers. कविता जी, आपको बातचीत में शामिल करना चाहूँगी और हिंदी की किताबों पर चर्चा करेंगे कि हिंदी की पाठ्य पुस्तक में क्या है कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए। पहले तो सभी को नमस्कार। और अगर आप बात करते हैं, जैसे कि अभी हमें वर्धा मैम ने बताया कि उनकी जो अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक थी वो थी मृदंग, और हमारी जो पाठ्य पुस्तक है कक्षा 1 और 2 के लिए उसका भी बहुत ही सुंदर नाम है, एक वाद्य यंत्र से लिया गया है जिसका नाम है सारंगी। और बच्चों के लिए जैसे ही हम वाद्य यंत्र की बात करते हैं और इन वाद्य यंत्रों की बात करते ही हमारे मन में सुंदर सी आवाज़ गूंजने लगती है, वैसे ही इन पाठ्य पुस्तकों में जैसे आप देख रहे हैं वहाँ पर कि सारंगी 1 और सारंगी 2 दोनों ही पाठ्य पुस्तक हमारे कक्षा 1 और 2 के लिए हैं, जिसमें सुंदर सुंदर गतिविधियों के कारण उसको रुचिपूर्ण बना गया है, जिससे बच्चे भी और शिक्षक जिनकी हम बात करते हैं वो भी बहुत ही आकर्षित होंगे। और इसका पूरा ध्यान लिया गया है कि बच्चों को और कहीं भी शिक्षकों को बाहर जाने की जगह ना हो, यहीं पर सारा, चाहे वो कोई भी विषय वस्तु की बात हो या कोई भी कारण हो, बच्चे इसके प्रति आकर्षित रहेंगे। और हम अगर बात करते हैं इसकी पाठ्य पुस्तक की, तो इस पाठ्य पुस्तक में बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे अगर हम विशेषता की बात करते हैं हिंदी भाषा की, तो हिंदी भाषा में बहुत, हमने एक विषय वस्तु की बात करते हैं या हम बात करते हैं
कि हिंदी भाषा सीखने के लिए हमें कौन कौन से चीज़ों की ज़रूरत होती है। बहुत सारी चीज़ होती हैं, जैसे कि लिखना, और हम बात करते हैं लिखना, सबसे पहले जैसे हमें वर्धा मैम ने बताया था कि बच्चों की ललक होती है, बच्चा सुनता है, बोलता है, पढ़ता है और लिखता है, जैसे मैम ने बताया था। वैसे ही हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में भी ऐसी बात की गई है, ऐसे गतिविधियों को लिया गया है जिससे सारे कौशलों का हमारे बच्चों में डेवलप हो सके। साथ ही साथ हम अगर बात करते हैं तो इसमें इस पाठ्य पुस्तक में बच्चों की अनुभवों की और भागीदारी की भी बात ली गई है, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि अपने आसपास की चीज़ों से बहुत कुछ सीखते हैं और उन चीज़ों को सीखने के बाद उनकी भागीदारी कैसे होती है और वो कैसे कक्षाओं में अपनी बात प्रस्तुत करते हैं, इस पर भी बहुत ध्यान दिया गया है। और अगर हम बात करें पाठ्य पुस्तक के आगे की तरफ, जैसे कक्षा 1 की सारंगी हो या कक्षा 2 की है, तो बहुभाषिता पर भी बहुत ध्यान दिया गया है। जैसे कि हमारे अंग्रेजी की किताब थी मृदंग, इसमें जैसे मैम ने हमें बताया था। और गद्य और पद्य का चयन जो इस पाठ्य पुस्तक में लिया गया है वो इस तरह लिया गया है कि बच्चे बहुत ही रुचिपूर्ण आकर्षित हों, क्योंकि चाहे बात करते हैं जैसे चित्रों के माध्यम हो, चित्रों का माध्यम भी ऐसा लिया गया कि रंगे, जैसे आवाज़ हमें आकर्षित करते हैं वैसे रंग भी आकर्षित करते हैं, तो रंगों का चयन भी उसी प्रकार लिया गया है। और बहुत सारे ऐसी गतिविधियां भी इस पाठ्यपुस्तक में आपको देखने मिलेंगी जिसमें रचनात्मक बच्चों की कल्पनाशीलता पर जोर दिया गया है, क्योंकि बच्चा जब आता है कक्षा 1 में और बाल वाटिका, चाहे वो बाल वाटिका 1, 2, 3 में ना गया हो, पर बच्चा घर में भी बहुत कुछ सीख के आता है और बच्चों में कुछ ना कुछ रचनात्मक सोच होती है, कुछ ना कुछ उसमें कल्पनाशीलता भी होती है। उस रचनात्मक और कल्पनाशीलता को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत सारी गतिविधियाँ इस पुस्तक में ली गई हैं। और इस पुस्तक में हम अगर देखें तो आगे की हम सारंगी 1 की बात करते हैं जो कक्षा 1 की है, उसमें हमने 5 इकाइयाँ ली गई हैं और जो ये विषय वस्तु लिए गए हैं वो है परिवार, जीव जगत, हमारा खान पान, त्यौहार और मेले और हरी भरी दुनिया। अगर हम बात करते हैं त्यौहार और मेले की, तो बहुत सारे ऐसे कविता या कहानियाँ ली गई हैं जो त्यौहार और मेले पर आधारित हो। खान पान के लिए भी बहुत सारे इसमें हमने जैसे कहानियाँ हैं या बहुत सारे रचनात्मक या चित्र दर्शन का भी हमने इसमें सहयोग लिया गया है। और परिवार की बात करें तो इसमें चित्र वर्णन जो हम लेते हैं, चित्र वर्णन में पहले ही है पार्ट, जैसे मेरा परिवार की बात करते हैं तो बहुत ही सुंदर चित्र वर्णन दिया गया है जिससे बच्चा कुछ न कुछ अपने परिवार की बातें तो करेगा पर चित्र में दिए गए दर्शाए गए विभिन्न पहलुओं पर भी ध्यान देगा। इससे उनकी जो बोलने की, सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। हम अब अगर बात करते हैं कक्षा 2 की सारंगी की, तो इसमें जैसे हमारी विषय वस्तु की बात की वो भी परिवार ही रंग है, हरी भरी धरती, मित्रता और आकाश है। और इसमें आकाश के लिए बहुत सुंदर कविताओं का हमने ये ध्यान लिया गया और बहुत सारे कविता के साथ साथ कहानी जैसे कि चांद पर लिया गया है जो बहुत ही बच्चों को आकर्षित करेगा। और रंग ही रंग की बात करते हैं तो रंग ही रंग, क्योंकि बच्चों का रंगों से बहुत ही बड़ी, अगर हम बोलें तो रंग बहुत ही आकर्षित करते हैं बच्चों को, चाहे वो रंगों की बात हो, लाल, नीले, हरे, पीले, और हर जगह जो रंगों की दुनिया बोलते हैं वो बच्चों में समाई गई है, तो बच्चा बहुत आकर्षित हो। तो ऐसी कहानियों का भी चयन इस पाठ्य पुस्तक में लिया गया है। और कक्षा 1 में अगर हम पर्यावरण को लेते हुए बात करें तो बहुत ही सुंदर कविता है, जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ। इससे कुछ नैतिक मूल्यों का भी ज्ञान बच्चों को हो, इसके लिए बहुत सारी गतिविधियों का ध्यान लिया गया है। और मित्रता की बात करें तो मित्रता के लिए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपने मित्रों को बहुत अहमियत देते हैं। और मित्रों की बात करें तो उनके लिए मित्र मतलब अगर बात करते हैं तो हर एक कोई अपने मित्र के लिए, मैंने देखा है कि बच्चों में मित्रता की ऐसे ये रहती है, वो एक ना एक अपने अनुभव उनके साथ सब जोड़ते हैं और मित्रों के साथ सीखते भी बहुत है। तो ऐसी कहानियों को लिया गया है जिससे मित्रता की भावना और बढ़े। और साथ ही साथ जैसे परिवार का आता है तो इस इकाई में भी परिवार का समावेश है।
हम जब भाषा की बात करते हैं, जैसे वर्धा मैम ने हमें बताया था कि, और हमें सनवाल मैडम ने भी बताया था कि बाल वाटिका से लेकर चाहे वो अंग्रेजी भाषा हो या अभी हम आप हिंदी की बात करते हैं और उर्दू की बात करेंगे, तो भाषा शिक्षण के 4 स्तंभ होते हैं, जैसे मौखिक भाषा का विकास, शब्द पहचानना, पढ़ना और लिखना। तो बच्चों को मौखिक भाषा का विकास बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर की जब हम बात करते हैं, जो हमारा गोल है, उसके लिए जब बच्चों में ये डेवलप करने की बात आती है तो बच्चा बोले, और बोलने के लिए सुनना भी बहुत ज़रूरी है। तो सुनने की भी एक बच्चों में आदत, इसमें इतनी हमने बहुत सारी गतिविधियाँ डाली गई है, जिससे उन गतिविधियों के कारण बच्चों में सुनने बोलने की क्षमता बढ़ने का पूरा प्रयास किया गया है, और साथ ही साथ शब्दों के चयन, शब्दों की पहचान भी बच्चा कर पाएगा। भाषा शिक्षण के 4 स्तंभों में अगर हम मौखिक भाषा के विकास की बात करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि बेहतर ढंग से सुनकर समझना ये बहुत ही ज़रूरी है। बच्चा सुनता है पर सुनकर क्या वो समझ पाता है, इसीलिए ऐसी गतिविधियाँ इसमें डाली गई हैं जिससे बच्चा सुनने के साथ साथ उनकी समझने की भी क्षमता बढ़ेगी। साथ ही साथ मौखिक शब्दावली का विकास, क्योंकि जब बच्चा सुनेगा तो उन शब्दों को ध्यान में रखेगा, और जब ध्यान में रखेगा वो कहीं ना कहीं उसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में करेगा। इससे बच्चे की शब्दावली का विकास होगा। साथियों व जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत और चर्चा का उपयोग सीखने के लिए भी करना बहुत ज़रूरी होता है। इसका भी पूरा ध्यान इस पाठ्यपुस्तक में लिया गया है। अब आप देख रहे होंगे शब्द पहचान, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ चित्र दिए गए हैं, और ये जो हमारी सारंगी है इसमें चित्रों पर बहुत ही सुंदर सुंदर आकर्षित चित्र दिए गए हैं, जिससे कि बच्चों का ध्यान हम आकर्षित कर सकें। और रंगों का चयन भी ऐसे किया गया है कि जैसे लाल, पीला, नीला, और जिन रंगों को बच्चे पहचानते हैं। आप जैसे देख रहे हैं कि आओ सुने, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि चित्र दिए गए हैं, जैसे अनार हो, अमरूद हो, अदरक हो, माँ हो, दादा हो या घर हो। जब इन चित्रों को देखते हैं तो बच्चा पहचान लेता है कि इन चित्रों में क्या दिया गया है। इन चित्रों को पहचान कर जब बच्चा बोलता है तो क्यों वो सीख कर आया हुआ है घरों से। अगर वो सीख कर भी नहीं आया हुआ है तो बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं कि हम उसे अपने कक्षाओं में पढ़ा सकते हैं, लेकिन इन किताबों में आप देखेंगे कि बच्चा खुद ब खुद उनको रंगों की सहायता से चुन सकता है। तो जैसे शब्दों की पहचान के लिए प्रिंट जागरूकता, ध्वनि जागरूकता, प्रतीकों और ध्वनि का संबंध, लिखित शब्द पहचानना और शब्दों को लिखना। जैसे कि हमने यहाँ पे बात की है ध्वनि जागरूकता की, तो इस पाठ्यपुस्तक में आप देखेंगे कि हमने ध्वनियों की पहचान पर बहुत गतिविधियाँ दी गई हैं, और ध्वनि की पहचान इसलिए दी गई है क्योंकि बच्चों में ये जागरूकता होनी चाहिए। क्योंकि जब बच्चा ध्वनि की जागरूकता उनमें होती है, ध्वनि पहचानता है, तो शब्दों का जो हम बोलते हैं अंबार उनमें होता जाता है। अब आती है जैसे हमारे 4 स्तंभों में एक पढ़ना भी था, तो पढ़ने के लिए लिखित सामग्री से अर्थ का निर्माण करना और आलोचनात्मक समीक्षात्मक ढंग से चिंतन करना, ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम बच्चों को दे देते हैं कि इसे पढ़ना है, पर क्या बच्चा उसे पढ़कर उसकी समझ हो और उसकी समीक्षा वो कैसे करता हो। तो वो भी एक चिंतन करना उस बच्चों में जो आती है डेवलप करने की बात, तो कई गतिविधियाँ ली गई हैं जिसके कारण आपको इस पुस्तक में सारी ये गतिविधियाँ दिखाई देगी। साथ ही साथ पढ़ने के लिखने का जब हम बात करते हैं, लिखने की जो गतिविधियाँ हैं, तो तार्किक और व्यवस्थित तरीके से विचारों या सूचनाओं की प्रस्तुति के साथ साथ शब्दों को सही ढंग से लिखने की क्षमता का निर्माण करना बहुत ही ज़रूरी होता है, और ये कक्षा 1 और 2 से ही शुरुआत हो जाती है। बच्चा चाहे बाल वाटिका जैसे पढ़ के आया ना हो, पर हम जैसे कक्षाओं में उसे ध्वनि की पहचान बता देते हैं, जिससे बच्चे की सुनने की क्षमता, जब वो सुनता है तो उनमें जैसे हम बोलते हैं कि शब्दों का ज्ञान का भंडार बनना जैसे ही बढ़ जाता है तो पढ़ने की क्षमता बढ़ जाती है, और पढ़ने की क्षमता के साथ साथ वो लिखने का भी प्रयास करता है, जिसके साथ साथ हमें बहुत अच्छे रचनात्मक लेख और ऐसे हमें उनकी कल्पनाशीलता के कारण हमें बच्चों की गतिविधियाँ इस किताब में आपको दिखाई देगी।
अब आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, जैसे कि हमने बोला था एक विषयी वस्तु है हमारी मेरा परिवार, तो ये बहुत ही सुंदर चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इस चित्र में आप देखेंगे कि बच्चे के मौखिक भाषा का विकास कैसे हो, इस पर पूरा ध्यान दिया गया है। पहले तो ये चित्र और कविता भी हो सकती है, चित्र दिया गया है, और अगर इस पर कोई कविता हो और जहाँ पे बात आती है बहुभाषीयता की, तो यहाँ पे बच्चा अपने भाषा या तो कोई भी भाषा जो सीख रहा हो अपने विद्यालय में, उससे जोड़ सकता है। साथ ही साथ इस चित्र को लेके हम बच्चों के साथ साथ बातचीत, जिसमें मौखिक विकास का हम एक प्रारूप बहुत अच्छे से दे सकते हैं, और बच्चों से कह सकते हैं कि आप भी अपने पसंद से अपने घर का, अपने घर परिवार का कोई चित्र बनाएं। और खेल खेल में इसको गणित के साथ जोड़कर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने बच्चे हैं, कौन कौन दिखाई दे रहे हैं। इससे बच्चों के बहुत शब्दावली का विकास हो सकता है। और खोजे और जाने इन सभी चीज़ों का विज्ञान से रिलेशन क्या क्या है, रिश्ता क्या है, वो भी मौखिक भाषा के विकास के अनुरूप इस गतिविधि में आ सकता है। अब आप बच्चों को यहाँ जैसे मित्रों के साथ, एक मित्र को भी हमने दिया था एक विषय वस्तु, तो आप देख रहे होंगे कि कितने सुंदर तरीके से चित्र का वर्णन दिया गया है, और बच्चे यहाँ पर बहुत झूम के और खुश दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों के चेहरे पर खुशी लाना हर एक शिक्षक का बहुत ही बड़ा प्रयत्न होता है, और प्रयत्न करते भी रहते हैं। पर हमने इस पुस्तक में बहुत सारे ऐसे गतिविधियाँ दी गई हैं जिससे कि बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बच्चों को मित्रों के साथ रहना बहुत पसंद है, वो मित्रों की हर बात जानते हैं। और जब मित्रता की बात आती है, चाहे वो खेल हो, खाने की बात हो, या फिर ये जहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे वो नाच रहे हैं, संगीत का आनंद ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी बच्चे आप चित्रों के द्वारा बहुत सारी गतिविधियाँ करा सकते हैं। जैसे कि चित्र में कौन कौन से लोग हैं जो नाच रहे हैं, कितने बच्चे हैं, तो हर एक चीज़ से इसका आप लिंक लगा सकते हैं, चाहे वो गणित हो या पर्यावरण हो या अंग्रेजी भाषा हो या बहुमूल्यता हो। मौखिक भाषा के विकास तथा लेखन कौशल विकास की गतिविधियों की बात करें तो ये बहुत ही सुंदर चित्र है, जिसमें पहला चित्र आप देख रहे हैं कि बागवानी का है। तो नैतिक मूल्य की बात आती है, जहाँ पर्यावरण की बात आती है, हम बोलते हैं कि हमें अपने भारत देश को हरित भारत की ओर ले जाना है। तो हरित भारत की ओर ले जाने के लिए पहला कदम हमें बच्चों से शुरुआत करनी है। जब हम इस चित्रों का माध्यम ये करते हैं तो यहाँ पे मौखिक भाषा के साथ साथ हम ऐसी गतिविधियों का भी चयन कर सकते हैं जहाँ पे बच्चे खुद बागवानी करें। यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहा है कि परिवार, एक घर है, एक परिवार है, और वहाँ पे कुछ बागवानी का भी कार्य हो रहा है। तो आप बच्चों से सवाल पूछ सकते हैं कि आप बागवानी करते हैं, आपको पौधा लगाना पसंद है, तो किसी न किसी दिन अपने विद्यालय में ऐसा कोई कार्यक्रम आप प्लान कर सकते हैं जहाँ पे बच्चों से बागवानी का हम प्रोग्राम कर सकें। और साथ ही साथ जब दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं तो वहाँ पे आप देखोगे खुशी का माहौल है। खुशी का माहौल जैसे बच्चों के चेहरे पर हम बोलते हैं कि मुस्कान लाने की बात आती है, तो यहाँ पे जब आप देख रहे हैं सब हंसी मजाक करते हुए, तो आप भी बच्चों से पूछ सकते हैं। जैसे हम बच्चों से आजकल बोलते हैं कि बच्चे मोबाइल से ही मतलब चिपक के रह गए, पर यहाँ पे हम बात करते हैं कि माँ की एक चित्र है, माँ है, दादा है, दादी है और पिताजी भी हैं, तो माँ के साथ बच्चे बैठे हुए हैं। तो ये जो गपशप की बातें आती, तो क्या आप पूछ सकते हैं बच्चों से कि क्या आप भी ऐसे समय व्यतीत करते हो अपने घर में, और करते हो तो कैसे करते हो। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि अखबार पढ़ना, जैसे हम बात करते हैं पढ़ने की कौशलता की, हम बोलते हैं कि हमें बच्चों में पढ़ने की कौशलता बढ़ानी है, तो कैसे बढ़ानी है। यहाँ पे दिख रहे हैं कि अखबार पढ़ते हैं, तो बच्चों में अखबार पढ़ने का चयन क्या आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि अखबार पढ़ते हैं, कक्षा 1 के 2 के। अगर वो अखबार की बात मना भी करें तो किताबों की बात कर सकते हैं। वो किताबें चाहे छोटी छोटी काव्य पुस्तक हों या छोटी छोटी कहानी जैसे चंपक हो, तो बच्चा ज़रूर बताएगा। और मौखिक विकास में जब वो बोलेगा, चाहे एक शब्द में बोले या एक वाक्य में बोले, पर उनमें वो आत्मविश्वास आ जाएगा। और तीसरे चित्र की बात तो हम कर चुके हैं। शब्दों को पहचानना एवं गढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ध्वनि की पहचान बच्चा कर लेता है, जैसे ध्वनि की पहचान करता है, शब्दों का
खेल हम जब खेलने की बात आती है, शब्दों के खेल के बहुत प्रकार होते हैं, पर शब्दों के खेल खेलने से पहले बच्चे को ध्वनि की पहचान ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ध्वनि जब बच्चा पहचानेगा तभी तो वो बता पाएगा कि इसमें कौन सी मात्रा लगी हुई है, उससे कौन सी ध्वनि आ रही है। तो जब वो बोलेगा, वो पहचानेगा तभी वो बोलेगा, और जब बोलेगा तब वो पढ़ेगा, और जब वो पढ़ेगा तब वो लिखेगा। लिखने में वही है कि उसकी करने की क्षमता बढ़ जाएगी, क्योंकि पहचानने आ गया तो बच्चा ज़रूर उसके अपने दिमाग में वो रख के आगे उसका उपयोग आने वाले अपनी कक्षाओं में ज़रूर करेगा। शब्दों के द्वारा साथी के साथ खेलना, साथी के साथ लिखना और पढ़कर सुनाना बहुत ज़रूरी है बच्चे को। जैसे अभी हमें वर्दा मैम ने बताया कि रीड अलाउड की बात कर रही थी मैम, तो यहाँ पर भी बच्चे के साथ जब शब्दों की पहचान होती है तो बच्चे ने उसे ज़ोर ज़ोर से बोलना ज़रूरी है। क्या जब वो बोलता है तो उसकी ध्वनि की आवाज़ सही आ रही है, और आ रही है तो उसका उच्चारण कैसा है, इस पर पूरा ध्यान यहाँ पे लिया गया है। कक्षा 2 में दिए गए पाठों में हमने सरल शब्दों में पहली, दूसरी और अंतिम ध्वनि का अभ्यास करवाया गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऐसी बहुत सारी गतिविधियाँ कि जिसमें ध्वनि की पहचान पर बहुत ज़ोर दिया गया है, जिससे शब्दों की पहचान हो सके, शब्दों को गढ़ने का हम बच्चों में पूरा विकास कर सके। शब्द पहचानने में दिए गए हैं, तो जब शब्द पहचानने की बात हम करते हैं तो शब्द की पहचान बच्चा कैसे करता है? पहले तो स्वर और व्यंजन उसे बहुत अच्छे से आनी चाहिए, और ध्वनि की भी उसे बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। जैसे उसे शब्दों का ज्ञान होता है, पहलियों की बात करते हैं हम, तो पहली बुझाना सभी को पसंद होता है। तो इस पाठ्य पुस्तक, चाहे वो कक्षा 1 की हो या कक्षा 2 की हो, दोनों में ही बहुत सारी पहलियों का समावेश किया गया है। कक्षा 2 में संयुक्त अक्षर के ऊपर भी ध्यान दिया गया है, और कुछ अभ्यास ऐसे दिए गए हैं जहाँ पे बच्चे इनको लिख पाएँ और इनको पढ़ पाएँ। साथ ही साथ अनुस्वार, चंद्र बिंदु आदि शब्दों को भी सम्मिलित किया गया है। जैसे एक कविता है हमारा चांद का बच्चा, ये कक्षा 1 में आखिरी में एक कविता दी गई है चांद का बच्चा, जिसे बहुत सुंदर कविता है, और उस कविता में बहुत सारे ऐसे आपको दिखेंगे कि गतिविधियां जैसे चंद्र बिंदु की, इसी कविता में नहीं, पिछले बहुत सारे अगर आप देखेंगे कि हमारे जो हैं पाठ्य पुस्तक है, इसमें कहानियों में भी हमने बहुत गतिविधियां ऐसी डाली है जिसमें चंद्र बिंदु और अनुस्वार पर गतिविधियां डाली हुई है। अब बच्चों को जब हम ये देते हैं ध्वनि पहचान तथा शब्द निर्माण विकास की गतिविधियाँ, ये गतिविधियाँ चाहे बच्चे हो बूढ़े हो सभी को पसंद आती है, पर इस गतिविधि को पूर्ण करने के लिए बच्चे को ध्वनि पहचान की बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चा ध्वनि पहचानता है तभी तो शब्द निर्माण करने में अपने आप में आत्मविश्वास लाता है, और उस आत्मविश्वास के साथ साथ उसमें पढ़ने और लिखने की क्षमता भी बढ़ती है। तो आप जैसे देख रहे हैं जहाँ पे दा शब्द की बात गई है, मी दिया गया है, माँ दिया गया है, ला दिया गया है। अगर हम बात करते हैं दा दी, दा और दी यानी कि दादी, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे ल और मी, ची, चा और चा, तो चाचा, तो बच्चे इन शब्दों को जानते हैं क्योंकि वो घर के वातावरण से ये सब चीज़ें सुनकर आए, इन शब्दों को सुनकर आए। कहीं पर उन्होंने चाचा, दादा, दादी, मामा, मामी, ऐसे बहुत सारे शब्दों का निर्माण बच्चे आराम से कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मीना, मीना, क्योंकि क्या पता उनके किसी दोस्त का नाम मीना हो, तो बच्चे कहीं ना कहीं इस खेल द्वारा भी शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो यहीं तक मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगी, और निधि यही था हमारा जो पाठ्य पुस्तक में सारंगी 1 और 2 की बात करते हैं, चाहे वो ध्वनि पहचान हो या पढ़ना हो, जो भी क्षमता है, मौखिक विकास हो, तो सभी चीज़ों का ध्यान इस पुस्तक में लिया गया है। और इस पुस्तक का निर्माण बच्चों के मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए ही किया गया, और बच्चे इसमें कहीं ना कहीं अपने आप में उनके आसपास के वातावरण के बारे में भी सीखेंगे, और अपने जो लर्निंग है, चाहे वो घर में हो, आसपास हो, अपने मित्र के साथ हो या अपने विद्यालय में हो, उसका कहीं ना कहीं उपयोग करेंगे। और बड़े प्यार और चाव से जो रंगों की बात करते हैं, जो हम इसकी संगीत की बात करते हैं, वो बहुत अच्छे से बच्चे
इसका और आकर्षित होंगे और ज़रूर करेंगे। जी कविता जी, ये थी हिंदी की पाठ्य पुस्तकों की चर्चा, और जिसमें हमने जाना कि क्या है सारंगी नामक आपकी कक्षा 1 और 2 की पाठ्य पुस्तकों में। कविता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अब हम आगे लेकर चलेंगे इस सफ़र को। और मैं इस्तकबाल करना चाहूँगी प्रोफेसर चमन आरा खान का। आप डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन लैंग्वेजेस में कार्यरत है NCERT में। इस्तकबाल करती हूँ आपका आज के इस प्रोग्राम के लिए, और आपसे जानेंगे कि उर्दू की किताबों में क्या है हमारे सभी देखने वालों के लिए, सभी नाजरीन के लिए, जितने भी देश भर से आज हमारे साथ लोग जुड़े हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से हमें बहुत लोग देख रहे हैं, और हमारी यूट्यूब की जो स्ट्रीमिंग है वो NCERT इवेंट्स पे लगातार चल रही है। मैं देख पा रही हूँ कि बहुत से व्यूअर्स लगातार सराह रहे हैं आज के इस प्रोग्राम को, और मैं चाहूँगी आप उर्दू की किताबों के बारे में भी आज थोड़ा सा जिक्र करें और बताएं। बहुत शुक्रिया। सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा आदाब और नमस्कार। और सबसे पहले आपका खैर मकदम है। जैसे कि पिछले 6 दिनों से हम लोग ऑनलाइन ओरिएंटेशन कर रहे हैं, मैथमेटिक्स और हिंदी, इंग्लिश और उर्दू की किताबें भी जो हैं वो उसका जो उन्वान है, जो नाम है किताब का, वो शहनाई है, और पहली और दूसरी जमात की किताब ही है। और इसको जो है मादरी ज़बान के तौर पर उर्दू पढ़ाने के लिए, यानी पहली ज़बान की हैसियत से जो बच्चे, और इसका मकसद ये है कि बच्चों को ज़बान जो है वो सिखाना और मुख्तलिफ़ मालूमात भी वहाँ पहुँचाना। तो इसमें जो अप्रोच ली गई है वो बैलेंस लिटरेसी अप्रोच को हमने इसमें इख्तियार किया है, क्योंकि हमारे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि बाल वाटिका से पढ़ के नहीं आते, सीधे जो है वो पहली जमात में दाखिला लेते हैं। तो वो बच्चे भी इसमें जो मौजूद सरगर्मियाँ हैं उनको कर सकें। तो ये देखिए आपके सामने है शहनाई क्लास 1st and 2nd। ये इसका कवर पेज है, शहनाई के नाम से, पहली जमात के लिए उर्दू की दरसी किताब। और ये दूसरी जमात का कवर पेज है शहनाई के उन्वान से। ऐसे ही अब ये पहली किताब में जो हमने कंटेंट दिया है, थोड़ा सा इसके बारे में भी मैं बताती हूँ आपको। तो इसमें पहला सबक जो है बारिश पराठे के नाम से कहानी है, एक तरह से चांद में परियां रहती हैं, नज़्म है अफसर मेरिटी की। 2 दोस्त कहानी है, आओ पढ़ें हम नज़्म है, चलो स्कूल चलें कहानी है, बाग की सैर कहानी है, शहज़ादा सोहन नज़्म है, सर्दी की दोपहर कहानी है, चांद का बच्चा नज़्म है। जो अभी सविता ने बताया ये अफसर मेरिटी की नज़्म है जो हिंदी में भी ली गई है। मेरी बिल्ली नज़्म असलम आज़ाद, हुरूफ तहजी यानी अल्फ़ाबेट को सिखाया गया है। फिर जाड़ा आया एक नज़्म है शफ़ीउद्दीन नैयर की। आम एक कहानी है, लोक कहानी शेर और मच्छर के उन्वान से। और आम नज़्म है इफ़ज़री की। गिनती का गीत नज़्म फ़राग जलालपुरी की। फूली रोटी ये कहानी हिंदी से तर्जुमा की गई है। प्यारी तितली अच्छी चिड़िया, ये 3 जो सबक हैं आखिर के, जिसमें एक कहानी 2 नज़में हैं, ये सिर्फ पढ़ने के लिए हैं, ताकि बच्चे जब पूरी किताब पढ़ लें तो इन कहानियों नज़मों को पढ़ें। ऐसी ही दूसरी क्लास की तरतीब है, इसमें भी नज़में हैं, कहानियाँ हैं। सारी दुनिया के मालिक अल्ताफ़ हुसैन अली की है। मेरा भाई ये कहानी है। आओ पेड़ लगाएं नज़्म। वक्त की कदर ये भी कहानी है। हमारा वतन नज़्म है। खेल का मैदान ये भी एक मज़मून है। बरसात नज़्म है सीमा अकबर आबादी की। बच्चों की दिवाली, ये दिवाली पर एक जो है वो एक तरह से एक कहानी है। गांधी जी की पेंसिल, ऐसी ईद का चांद नज़्म है हाफिज़ धामपुरी की। समझदारी ये भी एक मज़मून है। हंसता खेलता ख़ानदान कहानी है। हवाई जहाज़ नज़्म है अख्तर शिरानी की। हंसों का जोड़ा और कछुआ हत उपदेश की कहानी है। पंचतंत्र की कहानी ली गई है। पड़ोसी भी कहानी है। और मकड़ी नज़्म है इस्माइल मेरिटी की। ऐसे ही 3 इसमें भी एक कहानी, 2 एक गीत और एक नज़्म है। दूसरी जमात में आजा प्यारी चिड़िया आजा गीत है। आउट एक कहानी है जो कि हिंदी से तर्जुमा की गई है और उर्दू में भी रखी गई है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। बागबानी एक नज़्म है। तो इस तरह ये हमने तरतीब पर वो डाला। अब किताब की नुमाया खुसूसियात, जैसे कि अभी आपने हिंदी की और इंग्लिश की किताबों के बारे में
जाना। इसी तरह से हमने भी दोनों दरसी किताबें जो हैं हमारी NCFS और NEP 2020 को के तनाजुर को मलूज़ रखकर बनाई गई है। इसमें आसान, दिलचस्प और मुतवज्जो करने वाले अंदाज में सलाहियतों पर मबनी मवाद को पेश किया गया है। इसी तरह हमारी समाजी, सकाफ़ती, रिवायत से वाबस्ता ये दोनों किताबें जो हैं शमूलियती हैं। इन किताबों को पहली बार आर्ट से जोड़ा गया है, जिनके ज़रिए इस तरह की सरगर्मियों में जो जमालियाती एहसास है बच्चों में वो भी पैदा हो, एस्थेटिक सेंस। ये किताबें बच्चों में ख़ुद उनकी महारतों में अहम तस्वुरात को समझने में फ़हम भी पैदा करती हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ सरगर्मियों के हमरा खेल खिलौनों के ज़रिए आमोज़िश के तरीक़ों को मरबूत किया गया है। फिर ये किताबें जो हैं हमारे माहौल के तईं बच्चों को हसास बनाने के लिए इसमें काफ़ी मवाद और सरगर्मियाँ हैं। इन दोनों किताबों में कौमी, समाजी, इंसानी और अखलाक़ी अक़दार को भी मलहूज़ रखा गया है। इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि बच्चे अपने आसपास के माहौल में सरगर्म होकर सीखें और उन्हें रटने की ज़रूरत ना पड़े। मशक़ों से पहले ज़ेर तदरीस हरूफ फिर हरूफ से बनने वाले अल्फाज की मशक़ कराई गई है ताकि तलबा बआसानी उर्दू सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना भी सीख सकें। दोनों किताबों में असातिज़ा के लिए हिदायत दी गई हैं ताकि वो दौरान तदरीस इनका ख्याल रखें। अज़बाक़ और सफ़ात की तादाद भी कम रखी गई है। दोनों किताबों में ख़वानदगी, अदाद शुमारी, तख्लीक़ी और जमालियाती हिस्सों को तकमील के लिए हरकी और नफ्सियाती महारतों से भी जोड़ा गया है। इस किताब में कसीर लिसानी रवैयों को फ़रोग़ देने के साथ साथ बच्चों की माशरती और जिस्मानी नशोनुमा पर भी ज़ोर दिया गया है। सवालात ऐसे दिए गए हैं जो बच्चों में तनक़ीदी सोच पैदा करें, यानी क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चों की मजमूई नशोनुमा के लिए दूसरे मज़ामीन से रब्त पैदा करने की कोशिश की है, जैसे कि रियाजी है, आर्ट है, माहौलियात वगैरह, ताकि बच्चे आसपास के माहौल में ज़बान को बआसानी सीख सकें। इसी तरह इस किताब में भी ख़ुद की शनाख्त, घर, ख़ानदान, त्यौहार, रहन सहन, माहौलियात, ग़िज़ा, सेहत, सफाई, वतन परस्ती, हिंदुस्तानी अनासिर और तहफ़्फ़ुज़ व सलामती वगैरह से भी मुख्तलिफ़ असबाक़ के ज़रिए उनको मुतारिफ़ कराया गया है। तलबा की उम्र और नफ्सियात का ख्याल रखते हुए ऐसी कहानियाँ और नज़में शामिल की गई हैं जिन्हें तलबा बआसानी समझ सकें और उनसे महसूस हो सकें। ज़िंदगी की बुनियादी महारतें जैसे बाहमी तहफ़्फ़ुज़, मिलजुल कर काम करना, कामयाबी और नाकामी के वक्त जज्बात पर काबू रखते हुए जैसी महारतों को भी मद्देनज़र रखा गया है। मशक़ों के पहले ये हमने बता दिया कि पहले हरूफ फिर हरूफ से बनने वाले अल्फाज की मशक़ कराई गई है ताकि उर्दू आसानी से सुनना, बोलना, पढ़ना सीख सकें। और इसके लिए मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ दी गई हैं। कहीं जो है बच्चों से लिखवाए गए हैं, कहीं तस्वीरों के ज़रिए। इस तरह से उर्दू सुनना और बोलना के तहत मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ कराई गई हैं। ये पहला सबक है बारिश और पराठे के नाम से। इसके ये कहानी है और ये हमारे टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी की टीम उन्होंने जो है इसको डेवलप किया था। और इसको डेवलप करने का जैसे मैंने बताया कि इसमें बैलेंस लिटरेसी अप्रोच अपनाई गई है। जैसा कि शुरू में बताया था कि बहुत से बच्चे सीधे ही पहली क्लास में आते हैं, बाल वाटिका से पढ़ के नहीं आते, तो उन बच्चों के लिए भी वो बच्चे भी जो है इस किताब से जो है इस्तेफ़ादा कर सकें। जैसे ये मैं पढ़ के सुनाती हूँ, बारिश और पराठे। इसमें आप ये देखिएगा कि अलिफ, बे, पे, ते, टे, से इस और नून, छोटी ए, बड़ी, यानी 9 हरूफ को लेकर हमने इस कहानी को लिखा है। उसमें कोशिश यही की है कि अल्फाज वही लाए जाएं, इन आवाज़ों के ज़रिए बच्चे इनको पहचानेंगे। नीले आसमान पर आज काले बादल आ गए हैं, लगता है बारिश होगी, परवेज़ ताया ने कहा। सना ने बोतल मेज़ पर रख दी, पलकें उठाकर आसमान की तरफ देखा और बोली, जी ताया, मैं अम्मी से कहती हूँ आलू के पराठे बना लें, मज़ा आएगा। तो देखिए इसमें एक मंज़र है, बारिश का मंज़र है और दो बच्चे हैं और उनके अब्बू भी हैं और चचा भी हैं, ताया भी हैं इसके अंदर। तो ये पूरे मंज़र को अगर बच्चे ऐसे भी देखेंगे इसको, तो इस तस्वीर की मदद से भी बहुत कुछ समझने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से टमाटर की चटनी और आम का अचार भी सूबिया बोली, इसमें से आ गया, टे आ गया। और ऐसे ही पिछली बारिश में हमने कागज़ की नाव बनाई थी, सना ने कहा, तो सना में से आ गया। हाँ, टब में पानी भरकर
वो नाव चलाई भी थी। सूबिया ने आंखें मटकाते हुए जवाब दिया, लो तुम्हारे अबू भी आ गए और अब और मज़ा आएगा। ताया ने अबू की तरफ इशारा करते हुए कहा, अबू के हाथ में तरबूज, पपीता और टमाटर है। रूटेड इंडियननेस की बात कही जा रही है कि हमारे जो भी हमारे हिंदुस्तानी समाज में हिंदुस्तान है हमारा, वो हमारे सबकों में भी नज़र आना चाहिए। और जो हम अगर क्लास में पढ़ा रहे हैं तो मिसालें वगैरह भी कोशिश ये की जानी चाहिए कि अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसको दिया है। जैसे इसमें पराठे हैं, टमाटर है और ये सब चीज़ें हैं। ऐसे ही तरबूज है, पपीता है। इतने में हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगी। ज़रा सी देर में मौसम खुशगवार हो गया, सब बाहर निकल आए। मौसम की पहली बारिश के सब ने खूब मज़े लिए। तो जो 9 हर्फ हमने बताए थे उसी से मिलकर इस कहानी को डेवलप किया गया। उसके बाद असातिज़ा के लिए, टीचर्स के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई हैं जो कि सजेस्टिव हैं। इसमें बताया गया है कि इस कहानी में हमने 9 रूप सिखाए हैं, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, नून, छोटी है, बड़ी है। तो इस तरह से इनको रखा गया है। उसके बाद फिर उन्हें बताया गया है कि टीचर क्लास में आवाज़ों के ज़रिए, जैसे बारिश है तो साउंड से ही टीचर जो है बच्चों से सारी इसमें जो है वो लिखा गया है। फिर हर्फ बनाना, जैसे अलिफ और बे, अब, दब, रब, इसी तरह से पहले 1 हरफी, पहले 2 हरफी, 3 हरफी, 4 हरफी, इस तरह से लफ्ज़ों को। फिर उनकी ज़ेली शक्लें और उनकी पहली शक्ल, ज़ेली शक्ल और आखिरी शक्ल को भी थोड़ी सी मिसाल के ज़रिए बताया गया है। और ये हम बता दें आपको कि अभी हम हैंडबुक भी बना रहे हैं दोनों क्लासेस के लिए, पहली और दूसरी जमात की। अभी वो प्रोसेस में है। उसमें भी जो है वो भी, उसमें भी कुछ और एक्टिविटीज़ जो हम इसमें नहीं दे पाए हैं वो रहनुमा किताब जो हम बना रहे हैं, हैंडबुक, उसमें दी जाएंगी। इसी तरह ये देखिए चांद का बच्चा, जो कि अभी हिंदी में सविता ने बताया कि उन्होंने भी लिए। इसमें भी नून गन्ना जो है वो सिखाया गया है, चे सिखाया गया है। तो इसी तरह इसमें जैसे हमने बताया था कि आर्ट को जोड़ा गया है, कहीं बच्चे रंग भरेंगे, कहीं जो है तस्वीरें बनाएंगे भी। तो इस तरह से जैसे आप जानते हैं कि बच्चे जो हैं ड्राइंग करना बहुत पसंद करते हैं और शुरुआत जो होती है उनके लिखने से, वो पेंसिल से उल्टी सीधी लकीरें जो हैं बनाते हैं, लेकिन उनका जो तसव्वुर होता है उसमें ये कहते हैं कि मैंने ये लिखा है, ये चांद बनाया है, क्योंकि शुरुआत है। तो ये हमारे जो इस किताब में पूरी नून गुन्ना वाली लफ्ज़ पूरा करवाइए और उसे सामने लिखवाइए। ये रहा, ऐसे ही नीचे दी हुई तस्वीरों को, बोलियों को लिखवाइए जिसमें। फिर लफ्ज़ों को पढ़वाने वाली बात, अभी 2-3 दिन पहले भी एक सवाल आया था कि तलफ़ुज़ के लिए क्या क्या है। तो हमारी 4 ब्लॉक अप्रोच है इसमें, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो पढ़ने के तहत जब लफ्ज़ों को हमने, क्योंकि टीचर्स को हमने ये कहा है कि पढ़वाइए, लिखवाइए, करवाइए, टीचर करवाएगा, तो लफ्ज़ों को पढ़वाइए। इसमें कुछ लफ्ज़ हमने दिए हैं, आँख है, बंगाल है, फल है, तिरंगा है, गंगा है, सुरंग है, कंगाल है, पतंग है, और भी जैसे शीन खाफ वाले जो लफ्ज़ हैं, शबनम को सबनम बोल दिया या शमा को समा बोल दिया। तो ठीक है, बच्चे अभी क्योंकि सीखने के मरहले में हैं और अभी उनकी उम्र जो है 6 साल की है पहली जमात में, और वो जो भी बोल रहे हैं अपने घर से जो सीख कर आए हैं बोल रहे हैं, अगर उसमें वो बोल रहे हैं गलत भी बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, आगे प्रैक्टिस कराएंगे, आप मश्क कराएंगे तो बच्चे खुद ब खुद जो है वो उस लफ्ज़ को, अगर उनको बीच में टोक देंगे तो उनकी सीखने की वो जो है सलाहियत पर रोक लग जाएगी। तो उनको हौसला अफजाई करनी है इसमें। ऐसे ही ये मौसमों पर, जैसे हमने बताया त्यौहार हैं, मौसम है, तो इसमें थीम भी है। अब जैसे ये जाड़ा है नज़म, तो जाड़ा नज़म को लिया है। ऐसे ही लोक कहानी है शेर और मच्छर की, इसमें भी शेर और मच्छर की आपने बहुत सी कहानियाँ, लोक कहानियाँ सुनी होंगी। शेर और मच्छर तो कहीं है ही, शेर और जो है वो चूहा भी सुनी होगी। इसी तरह से ये मच्छर भी शेर को परेशान कर रहा होता है और उसको खून चूसने की कोशिश करता है। शेर सो रहा होता है, आँख खुल जाती है, वो जैसे उसको मारने की कोशिश करता है तो मच्छर एकदम उड़ जाता है और वो खुद जो है शेर के गाल पे उसका। तो बड़ी अच्छी कहानी है और इसको जब बच्चे पढ़ेंगे तो उनको बहुत मज़ा आएगा। ऐसी ही गिनती का गीत है जिसमें हमने कहा है कि मैथमेटिक्स को भी, जैसे हमने बताया कि रियाजी को भी हमने इस तरफ पैदा करने की कोशिश की है। तो ये एक नज़्म है गिनती का गीत। इसी के अलावा दूसरी क्लास में भी बताती चलूँ, एक मजमून है जो कि समझदारी के उन्वान से, उसमें हमने उनको जमा और घटा यानी प्लस और माइनस सिखाया। एक बच्चा है वो अपने वालिद से कहता है कि मुझे 50 रुपये दीजिए, मुझे 2-3 चीज़ें लेकर आनी है। तो वालिद जो है बच्चे से पूछते हैं कि आप ये चीज़ें ले आएंगे, तो वो
बच्चा ये कहता है कि नहीं मैं ले आऊँगा, तो कैसे कैसे लाएंगे, वो बताए मुझे एक पेंसिल खरीदनी है, पेंसिल तराश खरीदना है, तो उस बीच में वो पूछते रहते हैं कितने की खरीदेंगे पेंसिल, और ये कर करा के, और 50 रुपये का हिसाब जो है वो बच्चा बताता है। और उसके बाद फिर पूछते हैं 50 में से अगर आपने ये उसमें 35 रुपये उसके खर्च हुए होते हैं, तो अगर 35 निकाल दिए तो कितने बचे। तो इस तरह से इस बहुत ही अच्छे अंदाज से इसको लिखा गया है। और लिखने की एक्टिविटीज़ भी जैसे हमने बताया था, फॉर्मूला का अप्रोच है। तो ये जितनी भी हमारी जो महारतें हैं, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, इंटेग्रिटी है, बात आपस में मरबूत हैं एकदम। कहीं से जो है जैसे लफ्ज़ों को लिखवाया भी 1 2 3 4, ये इसी तरह से ये तस्वीर के ज़रिए भी, जैसे गिनती को गिनता हुआ जीना है, जीने पे चढ़ते हुए कदमों को गिनेगा, तो इससे भी बच्चे खुद करके भी, जैसे हमने बताया था, खुद करके भी सीख सकते हैं। ऐसे ही ये दूसरी क्लास में पहली नज़्म है मेरा भाई के नाम से, जो कि इंक्लूजन पर है। और इसमें एक बच्चा है जो कि चल फिर नहीं सकता, तो वो अपने जब बहन भाइयों को पढ़ते लिखते और खेल खेलते हुए देखता है, तो वो भी जो है वो ये सोच कर रह जाता है क्योंकि उसकी एक एक्सीडेंट में टांगे जो हैं वो इस काबिल नहीं रही हैं कि वो चल फिर सके, व्हील चेयर पर बैठा रहता है। लेकिन उसके जो भाई बहन है उसको अपने एक दोस्त दर्शन के पास ले जाते हैं। दर्शन अपने आंखों से देख नहीं सकता और उसका हाथ भी मुड़ा होता है, तो पैरों से वो अपनी चटाई बुन के दिखाता है। तो उस तरह से उस बच्चे के अंदर भी एक तरकीब पैदा होती है कि, और बाद में फिर वो आप कहानी में जब पढ़ेंगे तो उसमें यह है कि वो भी खेलों में हिस्सा लेता है। इसी तरह ही हमारा वतन नज़्म है, जैसा कि हमने बताया रूटेड इंडियन नज़्म की बात कही जा रही है, तो हमारा वतन नज़्म जो है इसमें भी पंडित ब्रज नारायण चकबस की है। और इसमें ये हिंदुस्तान है हमारा वतन, मोहब्बत की आंखों का तारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, वो इसके दरख्तों की तैयारियाँ, वो फल फूल पौधे, वो फुलवारियाँ, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। तो इसमें वतन की मोहब्बत, और वतन में हमारे क्या क्या चीज़ें हैं, फल हैं, फूल हैं, पौधे हैं, फुलवारियाँ हैं, फिर दरख्त कैसे हमारे मुल्क में जो है, हमारे वतन में जो हमारा वतन हिंदुस्तान है, तो उसमें किस तरह से हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो कैसे हैं, उस सब की बात इसमें की गई है। फिर ये खाली जगहों को हमने मुनासिब लफ्ज़ से भरवाया है। और इसी तरह हर सबक में जैसे कि बताया असातिज़ा की हिदायत दी गई है। ये हिदायत हमने ये सजेस्टेड है, अगर आप चाहें तो इससे भी इस्तिफ़ादा कर सकते हैं और अपने तौर से भी अपनी किसी भी नज़्म को, कहानी को पढ़ा सकते हैं और भी एक्टिविटीज़ इसमें करवा सकते हैं। इसी तरह से ये हंसता खेलता ख़ानदान है जो कि स्वच्छ भारत मुहिम के तहत किसी एक बच्चे को इनाम मिलता है। सब नानी के घर जमा है और उसकी खालाएँ, मुमानियाँ और उसके मामू और उनके बच्चे सभी मौजूद हैं। और उसमें फिर वो बताता है कि मुझे इनाम जो है वो सफाई पर मिला है। तो उसके बाद उसकी बहन, अपनी बहन के बारे में भी कहता है कि इनको भी जो है इनाम वहाँ से मिला है, साफ़ सुथरे रहने वाले बच्चे को। तो उसके बाद उनकी नानी जो है बच्चों को ये कहती हैं कि सफाई सुथराई के साथ हमें आसपास का जो अपना माहौल है उसको भी साफ़ रखना चाहिए। सिर्फ अपनी ही सफाई सुथराई नहीं बल्कि आसपास की भी, खाना खाते वक्त भी अपने हाथों को धोना चाहिए। तो हेल्थ एंड हाइजीन ये हमारे इसमें आ जाते हैं। ऐसे ही वो जो है, अब बच्चे बताते हैं कि स्कूल हमारे कल्चर, तो उसमें सकाफ़त को भी, कल्चर को भी हमारे पेश किया है। तो क्योंकि असम का पूरा कल्चर है तो उसे बताते हैं कि हमारे स्कूल में कल्चर प्रोग्राम हुए थे और बिहू जो हमारा वो है उसको भी दिखाया गया था। और ये देखिए इसमें तस्वीरें हैं। तो फिर नानी ये कहती है कि हमें अपने रिवायती कल्चर को भी नहीं भूलना चाहिए। और फिर दूसरे वो कहते हैं नहीं, आप ये सब पढ़ते हैं, लिखते हैं, सफाई करते, इसी साथ साथ आपको पढ़ाई भी करनी चाहिए। और पढ़ाई जब करते हैं तो कुछ ये नहीं कि सिर्फ मोबाइल पे लगे हुए हैं, बल्कि वो ये भी कहती हैं कि बच्चों को खेलना कूदना भी चाहिए, जिस्मानी खेल भी खेलने चाहिए। मोबाइल ठीक है, वो मालूमात का ज़रिया है, जितना ज़रूरत के तहत या पढ़ाई के तहत उस मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हैं। ऐसे ही ये इसमें मिसाल के मुताबिक हिस्सा अलिफ और बे के सही जोड़ मिलाने, जैसे ऐसे इसमें प्रोजेक्ट भी एक दिया गया है कि असम का लिबास, रक़्स, त्यौहार, खानों की तस्वीरें तलाश कीजिए और उनके बारे में कुछ जुमले लिखिए। तो जगह दी है, इसमें लिखेंगे असमी टोपी में रंग भरिए, ये एक एक्टिविटी दी गई है। ऐसी ये नज़्म है मकड़ी के उन्वान से, जिसमें जो मरकज़ी ख्याल है उसका यही है कि मकड़ी कितनी मेहनत से जो है वो बुनती है अपना जाला। तो उसमें इसी तरह बच्चों को भी जो है अपने पढ़ने लिखने के मेहनत जो है वो करनी चाहिए। मकड़ी ने क्या जाला ताना, कैसा अच्छा ताना बाना, आखिर उसने क्यों कर जाना,
इससे मिलेगा मुझको खाना, जिसने मकड़ी पैदा की है उसने इतनी अक्ल भी दी है। तो इस तरह से ये बहुत खूबसूरत नज़्म है। अगर इसको आप क्लास में असातिज़ा जो है इसको तरन्नुम से गवाएंगे और सब बच्चे कोरस में मिल के गाएंगे तो वो बहुत ही अच्छी नज़्म रहेगी। ऐसे ही इसमें मुनासिब लफ्ज़ से मिसरे मुकम्मल करवाए हैं। दूसरा मिसाल के मुताबिक नज़्म में हम आवाज़ अल्फाज हैं बहुत से, एक दे दिया ताना बाना, ऐसे ही और जो लफ्ज़ हैं वो बच्चे उसमें से तलाश करके लिखेंगे। तो ये था एक जी मुख्तसर सा तारुफ और किताब की थोड़ी सी झलक। और रही असेसमेंट की बात, असेसमेंट इसके साथ साथ ही चलेगा, कंटिन्यूस रहेगा। और बच्चे और जो असातिज़ा हैं, जो टीचर हैं हमारे, वो उनको जब वो क्लास में पढ़ाएंगे तो उसी वक्त में उनको पता चल जाता है कौन बच्चा जो है पढ़ने में वीक है, कौन सा बच्चा लिखने में वीक है। तो उसी तरह से असेसमेंट जो है वो साथ साथ चलेगा। दूसरी चीज़ ये कि इसमें एक्टिविटीज़ जो दी गई हैं वो तो खैर है ही, और जो टीचर्स की लिए हिदायत दी गई हैं इसके अलावा भी टीचर्स जैसे चाहें आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ के ज़रिए जो है क्लास में आप अपनी क्लास को बहुत ही दिलचस्प तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और मैं समझती हूँ ये जो किताब है ये तो एक झलक है, जब किताब आपके सामने आएगी आप उसको देखेंगे तो आप उससे कहीं ज़्यादा इसमें पाएंगे। तो इसके साथ ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने किताब शहनाई के बारे में सारी मालूमात हासिल कर ली हैं, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। तो आपका बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर खान, और हमारे सभी नाजरीन को ये बताने के लिए कि शहनाई नामक जो उर्दू की किताबें हैं क्लास 1 जमात पहली और दूसरी के लिए, उसमें क्या क्या है पढ़ने के लिए, क्या इंटरेस्टिंग सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज हमारे सभी व्यूअर्स जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से हमें देख रहे हैं और वो जान पाएंगे। लगातार हम बता रहे हैं आपको। और नेक्स्ट वी विल टेक यू टू a joyful journey of mathematics. You can very well see on your screens that we will be discussing in detail about the textbooks of class 1 and 2 of mathematics, and in between this session if you have any kind of suggestions or questions with you are watching this program live on NCERT events on NCERT's YouTube channel. There also you can write all your questions to us, and we will be taking up all your questions. We'll have a discussion with our experts. And now we are joined by Ms. Nisha Singh. I welcome you. She's Senior Consultant in Department of Elementary Education in NCERT. I welcome you for this orientation discussion, Ms. Singh. Thank you very much. Namaskar to all the viewers, and a very good morning to all the participants who are present today with us for these online orientation on the textbooks. So I give you a warm welcome to join this orientation program on mathematics textbooks, Joyful Mathematics. These textbooks are designed keeping in view of recommendation of NEP 2020, and they are also conceptualized and mapped very carefully with the developmental goals and competencies mentioned in NCF 2022. These textbooks do reflect the three main approaches throughout its chapters. One is the ELPS approach, which is moving from experiences of children, the concrete experiences of children, expressing it through language, conceptualizing it more through pictorial, and eventually understanding the abstract in the symbolic form. So in each chapter this approach will be reflected. So in brief, I would say it is like moving from concrete to pictorial to symbolic. In each chapter there are a lot of activities which provides concrete experiences to children, and next important aspect which has been there in the textbooks are the playway and toy based approach. These textbooks are for the foundational stage children, so we have carefully designed the textbook keeping in that aspect in our mind. So most of the activities do involve physical and other games. So keeping the essence of play
in it, and that is the reason we are calling it joyful mathematics, because children are having a different kind of an experience. Children will be enjoying thinking and solving those mathematical puzzles or the problems or exercises. So it won't be a mundane process for them. It will be an interesting experience which they will be enjoying. It is also taking into account lot of visual treat. If you will see, the entire textbook has attractiveness in it, which makes it so interesting that children won't be able to leave the textbook. So the visuals, the credit goes to the visuals of those textbook. The illustrations are being carefully designed, keeping it to be contextual. They are self-explanatory, and if you I'll move to my slide where I wanted to show you that how these beautiful illustrations are not only putting a stress on understanding of the mathematics, but also extending our mathematical understanding to further and linking it to our life experiences. Here, if you see this visual, you can really appreciate looking at it, and in one in the first glance you even won't really predict that it is a maths text. So that is the beauty of the textbook. There are many such kind of illustrations you will see in the textbook which will give you that kind of experience. So here there are this visual is a rich reflection of our heritage, our culture, and also some important festivals we celebrate. This is a phenomena which is celebrated throughout India, the Uttarayan of sun, which we celebrate of celebration as Pongal, Makar Sankranti, Lodi or Bihu in different parts of our country. So we have linked our festivals to the mathematical learning. So through this we are moving to the conceptual understanding of patterns. When they will see this kind of an illustration, they will not only link it to the patterns but various shapes they can see. So, and the visuals are also taking care of the comprehension of the text. These textbooks not only are rich in illustrations, but they also ensure the sensitivity towards the environment, positive values and habits, which the previous speakers have also talked about, which is a very, very important aspect. So, which is also not been left in the mathematics textbook. So, we are also using the context for enhancing positive values in children. Cultural rootedness will be seen throughout the textbook, and inclusive perspective, which is a very, very crucial thing for 21st century skills. If you see in the slide, you can see children playing a game which is focusing on the vocabulary, spatial understanding in mathematics, and the illustration for that is being given where children are enjoying a game and they are putting a ball in a basket. They have to put the ball in the basket. So teachers are free. Some of the games we have given there in the textbooks, they are very much free. Actually, they have to play these games in the classroom, and in the picture you can see that children are playing it together and they are there enjoying learning together, playing together with different abilities. So we are highlighting in these textbooks that we will be playing together, learning together with our peers, siblings, extending it to the home, to the community. So that was a very, very important aspect which was highlighted in NEP. So that is being taken care in the textbook. So we are giving a stress to inclusion a lot. So here the suggestive activity, for the teacher's note,
teachers are being suggested that you can also add a component to this ball. You can add a sound effect to it. It could be a ghungru. You can tie up a ghungru to the ball so that if there is a child who cannot see it, so the child can listen to that and can see whether the ball has dropped on the ground, and if they can concentrate more, they can also listen very carefully to the sound. It is also whether the ball has touched the basket also. So this will not only help the blind child to be part of this experience, but also it will help other children to develop their other domains, you know, the seeing or the hearing, which we are talking about, that these textbooks are taking care of the other physical domains at this level, which is very, very important at the foundational stage. So I was also talking about the illustration of these textbooks, where these textbooks are a visual treat for the children as well as for the teachers, because when the textbook is rich, it is also gives a teacher a joyful experience, because she has a lot of strong pedagogical support. She can extend it further from mathematical learning to other dimensions, you know, to other domains, and integrate its learning, and it can make it more holistic. And at this stage, when we talk about experiential learning, so the textbook is designed in a way where the teacher will find it to be a very, very rich resource to, you know, easily support it through other activities. Very easily she can adapt some of these activities and extend and integrate it. Each chapter here will have a QR code which will have some audio videos supported, e-content, some material which will support the chapters, and we have Jadui Pitara being developed by NCERT to support teaching learning experience in the classroom for the teachers. So that will also be linked here. So you can take advantage of other added resources to support your classroom teaching learning experience. So here you can see in the picture there is a poem on a furry cat. It is highlighting an experience of a child who is looking for a cat, and this is a poem where a teacher can sing it, she can read it, and they can have a joyful experience in the classroom. Enact it. This poem is based on the spatial understanding of children, where we have used a vocabulary of in, out, and above, top, down, inside, outside. So I could just read few lines from here. Looking for my furry cat. There is a boy who is looking for the furry cat, and the teacher can take the use of these illustrations to read it with the children for the comprehension, reading comprehension aspect in language. So here, along with the vocabularies which are very, very important in maths for the spatial understanding, the visual which we talk about, the print rich environment, the emergent reading aspect is being taken care. So you can enjoy this poem with the children, where you can have few questions that when they will see the picture of the poem, the teacher can keep asking questions regarding who is under the tree. So if you will see that picture carefully, you will find a man sleeping under the tree. So there is a lot of possibility here where the teacher can connect mathematics learning with the language development. So these textbooks are taking care of the multilingual, multicultural perspective, and it includes lots of stories, as I have mentioned, poems, and thought-provoking discussion to integrate the language with mathematics. Just to discuss it further, you will see in your slide here, there is a picture story depicting a mango tree which is being enjoyed by a lot of birds and a squirrel. So there are a lot of possibility here in the text,
where the teacher can not only help children understand mathematics, like there are a number of birds here, so how it began, who had the mango initially, then who all came with progression, so who came next after squirrel, who was third when after the crow. So like this, the teacher can touch upon the numberness. She can link numbers with each bird or animal which are coming to enjoy that mango. She can talk about the ordinality. Who is the third bird? They will go back and see who is the third bird, who was the fourth, who was the fifth, how many were there in the end. So she is talking about the cardinality, and okay, who were before the parrot. So the teacher is taking care of the backward and forward count. Then one more, because every time when there is a bird who is enjoying the mango, there is one more adding on. The concept of one more, one and one more makes it two, two and one more is making it three. So like that, this is the mathematical understanding which can be built, and you can expect there's a lot of discussion happening. Some children, they are participating with the teacher and they are talking loudly, some quietly observing what is the discussion going on, and they are also thinking with them. So there is a relevance for having this kind of a discussion in the classroom, and we call this kind of a discussion as a mat talk, which is a very, very important element in our 4-block approach which this textbook is based on. So this kind of a text is giving that kind of an opportunity for a teacher to have discussion in the classroom, which will initiate lot of questioning, lot of thinking, which is involving maths in it. For when we begin numbers, the numberness is a very, very crucial concept for a child to understand. So that's why a lot of question, okay, so how many birds were there in the end? How many birds were or animal were there in the beginning? So these kind of a question is helping children think about it, and they are talking on it, and there should be no rush for a right answer. Now they are thinking loudly and they are thinking mathematically. So who was before parrot or who was before crow? So the child is taking the cue from the pictures and trying to understand, relate it with it. And also this kind of a task is giving an opportunity to extend it further to the EVS. When we are talking about, have you seen these birds around you? So they'll try to connect that how many birds out of them they have seen, or there are some other birds which are there which is not here in the picture. So what they will identify the birds, you can talk about the habitat. So this is how you are linking with EVS here, environment here. What sort of sounds these birds make? How are their nests? Have they observed it? So the important aspect of observation in EVS could be extended here. Language development, definitely, because it is a picture story. So language aspect is definitely here, because each of these characters can be, they can be used as characters for a role play. So you can ask these children to become different birds, and they can come one by one and they can have their own dialogue. So, and also you can have a discussion. Have you ever enjoyed some kind of a treat with your friends at home or here in the school, or you can actually have a treat there in the classroom. So that's why I call this textbook a joyful mathematics for children as well as for teachers, because for teacher she can contextualize it, and she has a lot of opportunity to extend it, integrate it. These textbooks are especially carefully kept a text cum workbook design, so that
because at foundational stage children have to learn mathematics through concrete experience. So, a lot of activities should happen in a classroom. That is how we have seen that the teachers must be doing a lot of activities with children, because they have to have understand mathematical concepts through hand-on activities, whether it is measurement. So, they have to actually measure in the classroom. If they are involved with addition or subtraction, they have to actually bring objects in the classroom and they have to put them together. So, the textbook comes at the pictorial aspect, as we have talked about, in the textbook is following the ELPS approach. So, the textbook is trying to support the pictorial aspect of ELPS. We have given suggestions for experiences, we have given suggestions that certain activities can be taken up to support a concept, but teachers have to ensure that they bring in or they contextualize more such activities in their classroom. So, here in the textbook they will have lot of worksheets, designed questions where children can draw, color, they can solve those problems and write there. They are given questions where they have to frame their own questions. So, and they have to make toys, they have to use clay to make toys, and they have to use blocks or some other manipulatives to understand that particular concept. And there are a lot of thought provoking tasks which are there in Let's Do activities. We have a separate section for puzzles, because we feel that puzzles are something which even we as adults enjoy to solve. So, to bring that joyful element here in the textbook, we have a dedicated section in both the classes, class 1 and 2. Few suggestive puzzles are there. Teachers are free to think of more such kind of puzzles, and every day there could be some puzzles in the classroom which children have to solve together. They can solve it in small groups, they can think individually, or they can have a group discussions on puzzles, because puzzles motivate you to do the logical thinking, critical thinking, which is very, very crucial for mathematics. And we have special section for projects, where we want to take that learning in the classroom to go beyond, which can get linked with their life experiences. So, they go and observe, they find out they go at home and find out. And we also want to extend this learning should not remain at the classroom level, but they also get involved with their parents, with their grandparents, with their elder siblings or younger ones. So, a lot of task is there which we are calling the project work. So, where we are extending that conceptual understanding on a mathematical concept to the further domains or integrated with other subject areas. We have teacher notes there in each chapter, and these teacher notes are suggestive and sometimes they are extending the knowledge or the activity. If you see in the slide, we have although we have discussed about the puzzles, that we have a dedicated section for puzzles in both the textbook. These puzzles are not, and some of them are deliberately designed that they will have more than one right answer. And there is a reason for it, that as a teacher you should not be bothered about the right answer, but you must appreciate the logic the child is giving for that particular answer, and that should be discussed in a non-threatening environment in the classroom. So, we should encourage here that children have their own answers to it and what logic they are giving to support their answer. And sometimes we might have to give credit to their perspectives. So, as a teacher it is up to you, and the textbook is not focusing on any right answer. There could be right answers based on the logic the child is providing. So, and these puzzles also these puzzles are also
should not be assessed. That is a very, very important aspect, because the assessment again brings to a one right answer. The logic should be appreciated and it should be discussed critically. We don't say that whatever the child says you have to accept it, but let's have a common discussion in the classroom. Now we are raising the child towards more higher thinking skills, where the child is taking the perspective of other children also. So a lot of other domains are taking care here. They are learning together, they are becoming more receptive. That is what we we call it in higher thinking skill domain, that the child is taking others perspective, which is a very, very big task for these children. The project work here, you can have a glimpse that there is a one project work example is being highlighted, where they have to arrange 0 to 9 cards, but that arrangement have to be in some design. You could see there some 2 cards should be kept. The 2 cards should be kept where the sum will be 9. There could be 3 cards whose sum will be 9, and there will be, in the end, there will be the 2 cards which also makes it 9. So there could be different possibilities of making that 9. So we will be stressing on different ways of getting that particular answer, rather than just focusing on one particular way of answering it. These are some of the glimpses from the textbook where the concept of place value is being highlighted. So children are given some games which can be done through flashcards. So they are asked to think of a number which is greater than 50. So they have to think where that number will, which digits will make it a 50 or greater than a 50. So which digit they have to keep it on a tens place, which digit they have to keep it on a ones place. So that kind of a thing will be strengthened through certain activities and games. And there could be specific question that which is the largest 2-digit number which you can make, and when they have picked up any 2 cards, now the teacher is expecting them to make a largest 2-digit number. So what they are doing to make it a largest digit number? Will they keep the bigger digit into the tens place? So this kind of a thinking, this kind of a discussion is important in the classroom. And we have the arrow cards, which are very, very helpful resource for place value, which is a part of a Jadui Pitara also. So you can see here the children are using, and in the bubbles their dialogue is being mentioned. So how they are making, how they are using the arrow card, with arrow card, how the understanding of tens and ones is being getting cleared with the children, will be highlighted in this textbook. You can see it in the textbook. So as I have also mentioned earlier that this textbook is based on the design of 4-block approach. We have at length discussed about the oral mat talk, where we have taken up the mango treat, the picture story, which talks about different aspects of understanding of numbers, mathematical concept of numbers. Similarly, you will get a lot of other topics here in class 1 and 2 on measurement. There is a Kaddu ki Chopal, there is a short picture story kind of a thing. There is one Rani's gift, a story on measurement. So similar kind of a thing you will have in the textbook, and such kind of a discussion is expected from the teacher, so that mathematical thinking could be part of the classroom learning. We have second block, skill teaching. So lot of let's do activities there in the textbook, where the children are expected to do it all alone, or they can do it in pairs or with their elders or siblings.
So lot of with the support of other people, they can do lot of these tasks. Then the block 3 is talking about skill practice. Here we all know that in mathematics we do need practice after understanding the concepts, but that practice should not be a mundane experience. That practice should involve interesting and engaging activities. So we have kept a lot of game boards, lot of physical games, number line, and lot of other experience, a lot of manipulative, even the blocks we have used here in solving the worksheets. So a lot of different kind of material is being used, different kind of tasks and activities and questions are given to have that practice in a very meaningful and engaging way. The last block is on maths game. As I have mentioned, that games, activities are the throughout component of these two books, because our children at the foundational stage do learn through hand-on activities and playing games. So physical games like telling a particular number, like if I say 5 and they are making or grouping themselves into 5, or they are hiding some dots and asking them how many, after showing that number card, asking the other child how many dots can you tell I have in total. So similarly, lot of other games are there, some board games are there, some pair games, group games, or whole classroom games are there. There is a game on objects where they are touching the objects and telling about different properties and different shapes of the objects. Moving further, the textbook involves parents and guardians. It has been mentioned earlier. We have carefully kept certain tasks where the children have to extend its learning, classroom learning, and connects with the home environment, and especially with the elderly. So there is that kind of a connect, because in India we have family connect is a very, very important value. So in mathematics also we have tried to extend our classroom learning to the home and to the community. Assessment of the textbook, we have given task, interesting tasks in the textbooks which can be used as assessment, and assessment should be a formative aspect. It should not wait for we should not wait for a child at the end of a task to assess, but it will be an ongoing process throughout, where this discussion is happening. The teacher can have assessment then and there, and the most important thing a teacher need to understand is assessment for what. So we are actually focusing on it. We are not doing assessment of learning, but we are doing assessment for learning. So we are learning further. I am assessing to help it accelerate for further learning, and this will be assessment of my own teaching. So where I lacked in helping my child to make that concept learned. So teacher's observation, and when the children are involved in doing a task, so kind of questions the teacher will ask will help her assess that what are the areas still need to be addressed again, or what sort of new activities I can bring in, or if I have to take up this activity with my children, how I can contextualize it further. And there should be a lot of freedom in the classroom where the children can raise question. So that should be appreciated. That is also a very important part of an assessment, where the children are raising questions. So that should be another component which a teacher can consider while assessing children. So in the end, I would highlight by saying that we expect teachers that they need to understand the basic objective of the chapters. So as Professor
Khan has also mentioned that we are shortly coming with a teacher's handbook, which will also give you more insight on each chapter, that how these chapters are being designed and what is the intent behind the chapters and what are the basic objectives to be covered in the textbook. So, you know, the teachers are expected to understand that objective of the textbook, and also they needs to map it through the competencies and skills. So, and they are free to take these activities and contextualize it further, adapt them, adopt them, extend it, and help your children learn. So, I thank all my viewers, and best wishes to all of you. Thank you so much. And indeed, Ms. Singh, learning would be joyful with the way you have told all of us, and thank you for enlightening all our viewers here about the joyful learning of mathematics. And here I would like to tell you viewers who all are watching live right from northeast to throughout the nation, and we have seen in all the textbooks that ethnicity of India is being promoted. We have seen the multiculturalism, multilingualism we have seen in language textbooks, and all the pedagogy are in a way, we have seen the amalgamation of all the pedagogies, and with that art integrated learning as the experiential learning new education policy promotes, that has been incorporated in all these textbooks. Learning beyond the books, yes, out of the box learning can also be seen. And these textbooks will be working as workbook for you, for all the students who will be studying these textbooks. And of course, with the, as all of the viewers or experts have said, that this illustrations in the, or the picture reading in all the textbooks of grade 1 and 2 is actually a visual treat, not for just the students also, but for the teachers also, which will eventually make your learning very happy. The classrooms will be very rich. And here I would like to thank all our viewers, the teachers, teacher educators, headmasters, master trainers, educational administrators from NCERT, DIETS, BITES, CRCs, BRCs, and other stakeholders of government, government aided and private schools, and teaching educational organizations also for joining us today. And this was the orientation, the entire 1 week we bought this for you, and this is the last day of today's orientation, but certainly every ending leads to a new beginning. This will be the new beginning of the learning, and that's the message for today, all of you. And really thank you for joining us. And with this, I like to tell you here that we are proud that India assumed the G20 Leaders Summit and is convening G20 Leaders Summit for the first time in the nation in 2023. A nation deeply committed to democracy and multilateralism, and by leading the G20 Leaders Summit, India would surely find pragmatic global solutions, and by doing so, we are truly manifesting the true spirit of Vasudhaiv Kutumbakam, or the world is one family. So on this note, we will close today's orientation, and I'm sure you will be leading to new learnings and enriching your classrooms. I thank both of you for joining us in studio. Thank you. And this was the orientation. Thank you. Namaskar.